Greetings everyone, Scorosaurus here. I'm here to take a look at the River 2, one of my favorite purchases of the past year. The River series is an excellent portable generator. They call these solar generators because, of course, they can capture the energy of the sun and release that as a handy dandy, really good battery for people that don't know much about electricity, don't want to hassle, don't want to worry about power conversion rates or anything like that. This does most of the thinking for you, and that's what I love about it. So let's take a look here. We've got a 250 watt hour battery in the River 2, and it's got a number of ports here. We've got 12 volt DC. We've got USB, and USB-C. That's used to both charge and refill this battery, which is what I use it for. And then, of course, the ever important AC. Now, if we were to turn that on, whoops, I clicked it twice. If we were to turn that on, we're going to see that that is charging my HeyBike electric bike. Now, this has a 750 watt hour battery, so if I was to actually run this dry, this would not be able to keep up. But for daily rides where I'm going to use about 10% of the battery or so, I use this exclusively to refill it. So with a little bit of solar, that means that this bike and this system is completely off-grid, and it is completely, well, free to recharge, and I love that. I'm going to show you real quick how I get this recharged. So in the back, it's got a solar recharging cable, and that goes all the way up. I know that looks like a mess. There's a reason for that. There's a reason. It's my solar panels on the top. Now those are 6 different 15 watt Harbor Freight solar panels. Those are just some leftovers from, let's say 10, 15 years ago. And I just thought I'd repurpose those. And they're working great here. But the fact that it's 6 different ones is why there's so many cords. I then got a connector that pulls those in parallel and goes right into here. So essentially, that 90 watts of solar does recharge this daily without any sort of problems. Now, if it's a cloudy day, or if just for some reason, let's say, hey, I used the whole battery on the bike and I want to recharge this still from this particular battery, I have the USB-C right here. That's able to pull 100 watts theoretically. The actual number is going to be about, I've seen it get to 58 or so on here. I have that leading to my Delta 2. We're going to talk about that soon as well. So at night, I can actually use the Delta 2 to recharge this if I happen to know that either I've run it dead, or it's going to be particularly cloudy the next day or something like that. We can see right now that the solar panels are pulling in about 56 watts at any given time, and it's sending out 117 to the bike. So it's doing the math right now, letting me know that at this current rate, it's going to keep on powering things for about 2 hours. Now, if I was to turn off the AC, it's then going to tell me how long it would take to recharge this. Actually, it would if I had drawn it down a little bit more. Because it's so high, it's letting me know how long it can just stay on. And what it's telling me is basically that this unit itself, just showing the screen and being connected to Wi-Fi, does use battery. So it's one of those things that we've got to be aware of. If you really want this for emergencies, you've got to put it into basically stasis. Turn it off completely. I never do that because I do recharge it daily using solar. So I have it always connected to the app. I wanted to show you this app too, because I think it's really cool. So again, this is the River 2. This is a solar generator. I have it working with solar right now. It has a fantastic app. So there we can see the 2 different generators that I have. And here's the River 2 right now.
And using this app, I can actually control at any given time if I want to turn on or off the AC. I can see just how much is being pulled in or drawn out. I can turn it, I can turn the different functions off. And I use this basically when I'm in the shower or something like that, just to peek at these different units and, if necessary, equalize them. So that I have more energy in the battery that I'm using that particular day to do whatever tasks it is I'm aiming to do. So the River 2, absolutely a fantastic unit. It's about 7 pounds, so completely light. I put this in the car and I use it to charge all the fun toys that I have, you know, floats and things like that. So definitely recommended. 5 out of 5. फ्लो, और ये मैंने अमेज़न से जस्ट अभी ऑर्डर किया है। ये देख सकते हो, इसमें मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग में लगाया हुआ है ई एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ये मेरा छोटा पड़ रहा था और कंपनी मुझे ये भेजने भी वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोग आपको देते हैं जब आप लोग डेमो अटेंड करते हो, तो जो मुझे अभी पता चला आफ्टर द डेमो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 40% चार्ज है, 40 वाट का आउटपुट ले रहा है फॉर चार्जिंग, और 1 आवर तक ये चार्ज अभी कर सकता है इन 39% ऑफ चार्ज। मैं इसको 2 दिनों से ऐसे यूज़ कर रहा हूँ विदाउट डेमो। आज मुझे अभी डेमो मिला और बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं इसको कल रात से लगातार अपने लैपटॉप में चार्ज में लगा के रखा हूँ और सारे लैपटॉप चार्ज हो रहे हैं, मतलब बढ़िया से। आप एक्सटेंशन चाहे जो भी यूज़ करना है कर सकते हो इसके साथ में, और मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि 300 वाट टोटल, आप उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अभी जैसे 41 वाट यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम 300 वाट तक जा सकता है ये, ठीक है। और इसको चार्ज करना भी बहुत ही सिंपल है। इसके साथ एक चार्जिंग केबल आती है, बस इसको आप अटैच करो और इसका इनपुट आप पावर सप्लाई में डाल दो, ये चार्ज हो जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोडक्ट है, बहुत ही हल्का है, ठीक है। और ये कोई पेड मुझे किसी ने कुछ ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे से ख़रीदा, बिकॉज़ काम करने के दौरान बहुत बार हमारा लाइट वगैरह चला जाता है, ठीक है, और इमरजेंसी चीज़ें अफेक्ट होती है, ठीक है। बारिश वगैरह का सीज़न है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कार से चार्जिंग पैनल मिल जाता है और एक इनपुट मिल जाता है आपको, जिसको स्विच ऑन कर सकते हो यहाँ से और चार्ज कर सकते हो। इसको स्विच ऑन नहीं करोगे तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और ये 2 आपको मिल जाते हैं USB A वाले, जिससे आप पावर बैंक वगैरह छोटी चीज़ें चार्ज कर सकते हो। और ये USB C है, जिससे आप डायरेक्टली USB C से भी चार्ज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको मेन केबल से चार्ज कर रहा हूँ, देख सकते हो ये मेन केबल है, उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ। और अगर आपके पास मोबाइल चार्जर भी है USB C, तो उससे भी ये चार्ज होता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। इसको चार्ज करना बहुत आसान है और इसके ऐप से ये पूरा कंट्रोल होता है। ऐप का भी डेमोन्स्ट्रेशन मुझे अभी कंपनी ने दिया, तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस। और 5 साल का वारंटी मिलता है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, वैल्यू ऑफ मनी है। और मैं पर्सनली इम्प्रेस हूँ इस प्रोडक्ट से, और इसीलिए मैं ये वीडियो रिव्यू के तौर पे डाल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यू मस्ट गो फॉर इट। इकोफ्लो इंडिया में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। मुझे भी थोड़ा डर था जब प्रोडक्ट लिया था, तो बट इट्स फंटास्टिक प्रोडक्ट। अगर ऑन ऑफ की मैं बात करूँ तो देखो, ये बहुत ही सिंपल है। इसको बस 2-3 सेकंड प्रेस करके रखना और ये ऑफ़ हो जाता है। एक सिंगल क्लिक में ये स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट काम करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये, आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसको कुछ भी हो तो इनका जो कस्टमर सपोर्ट है, आप उनको डायरेक्ट कॉल करना, और वो लोग तुरंत कॉल, वीडियोस कॉल, सब कुछ में ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और मैं बहुत मतलब उनके डेमोन्स्ट्रेशन से बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा। आई एम नॉट फ्रॉम दैट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पता होती है, फर्स्ट टाइम मंगा रहा हूँ। बट लेकिन जिस हिसाब से उन लोगों ने बताया, मुझे बहुत ही ईज़िली ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, जस्ट गो फॉर इट।
Good guys, good.